Good afternoon, everyone. Welcome to the session. I hope I'm live now. Yeah, let me just check. Yeah, I'm live. Welcome, everyone. Hope all of you are doing well. So, this is yet another session on the must solve question series. I had promised you 15 sessions on this total series, and in all the classes of this series, you can see I have taken up important questions and we have discussed them in order to understand if a particular chapter is being studied, in what way you should look at the concept, what kind of questions you must practice. Now, the way I say must solve question, it doesn't mean I'm guaranteeing any question in this series or I'm making any predictions about the question. But you do get a feeling when you solve questions that okay, this is something important. Maybe solving this question will enhance our understanding of that particular concept, or from that particular chapter will be more clear on how to apply the concepts. So that is the purpose of the these sessions. Coming month, I'm starting to new series. एक तो workshop होगा, 5 workshops, and then a last mile series जहाँ पे all important topics of quants, ठीक है, विल रिवाइज देम ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. मतलब ऐसे तो कभी हम बोल नहीं सकते ये इंपॉर्टेंट है वो नहीं है, बट जो जो कॉन्सेप्ट्स आप कैट के एस्पिरेंट शुड डेफिनेटली नो, उसको मिस नहीं कर सकते. दोज थिंग्स विल ट्राई एंड डिस्कस, सो दैट विल ऑल्सो आई थिंक विल हेल्प यू अ लॉट in your preparation process. So that is in the coming month. Now, people attending live, hope I'm clearly audible and visible to everyone. Do like the session and subscribe to our Unacademy CAT-alyst channel if you're new to this. Every day you can get lots of content on this channel, be it VRC, LRDI, quants, strategy sessions, exam prep, and everything. So let's begin. This is a background of mine. Not long back, I was also a student preparing for CAT, and I have more than 4 to 5 years of experience now in teaching. And in my experience of teaching, what I've seen is doing the things right. That is also definitely necessary, but avoiding mistakes is again plays a very important role, crucial role when you're making a preparation like this. Doing things currently is one part, but avoiding mistakes, the mistakes which people have done in the past. So that is what not just me, every faculty tries to advise the same things in their classes, because we see people every year preparing for the exam, very promising candidates but not able to score because of certain mistakes that they do. Okay, so try and heed to the advices that you get in the classes, and do not do things which are totally incorrect for the exam, like skipping chapters and not practicing every day, not giving mocks. These are some very common mistakes and biggest blunders that you can commit in your exam preparation. Okay, so the things that benefited me, I try and share the same things in my classes. The questions I practiced and the way I look at every section, look at every chapter, I try and share the same viewpoint in my classes, so that you can benefit in the same way that I did. Now, just a quick announcement before we start today's session. October 30th को All India mock test हो रहा है. I hope all of you are aware of this. Free for all. You can scan this code and use my invite code to register for free. Okay, everyone can appear this mock test. A lot of candidates would be appearing this, so you'll get a very good idea about what your performance is against the people who are equally prepared or maybe better prepared, but definitely serious about the exam. So do give the test, analyze what is going wrong, what is going right for you. वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कि टेस्ट देना एंड देन एनालाइज करना, व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, which all areas I'm solving comfortably, which all areas I'm struggling at. And once you identify the problems, don't get disturbed or don't be demoralized because मेरे इतने सारे problems हो रहे हैं. Always have a positive approach. Last class we have seen the same thing. Positive approach will make things easier for you. If you bring a negative approach, it will only worsen things. Okay, it will not help you in any way. If I'm not able to solve a particular question, rather than getting depressed that इतना पढ़ा फिर भी नहीं हो रहा है, just go for a positive thinking that कैसे solve होगा. If there's a problem, there's definitely a solution. So always think कि कैसे solution होगा. वो solution समझे, हो सकता है it's something very new for you or something which after you read you feel like okay ये मैं भी तो कर सकता था. बहुत बार तुम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा. You can completely relate to what I'm saying. तो एक बार वो फीलिंग आता है कि यार ये मैं भी कर सकता था, but why I couldn't think of it. What should I do so that I can think of these questions in the coming future? So you have to keep doing this process again and again and again. And when you see a new question,
Just try and break down the thought process. What can be the thought process of someone who is able to solve questions quickly? ऐसा तो नहीं उसको पहले से questions पता है or any kind of a God gift. It's all your memory. Okay, how much you have retained. When I'm solving a chapter, I'm reading a chapter, I'll solve 50 different questions. So when I see a new question from the chapter, my brain automatically links to those 50 questions that I've solved. Maybe something like this, maybe something like that, maybe a combination of this, or maybe the steps that I had thought through while solving a question. कहीं ना कहीं वो माइंड पर रह जाता है. तो how much involved you are when you are practicing, that also decides your chances of getting a new question solved. Because एग्जाम में हम प्रिपेयर क्या ही कर रहे हैं, सोचो. ऐसा एक एग्जाम है जहाँ पे एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अ न्यू क्वेश्चन. क्वेश्चन रिपीट होता ही नहीं है. कंप्लीटली रैंडम LRDA सेट्स, रैंडम क्वांट्स के क्वेश्चंस. ओके, कहाँ से भी RC आ सकता है. व्हाट आर वी एग्जैक्टली प्रिपेयरिंग? हम 50 बुक खत्म कर भी रहे तो वो क्वेश्चंस तो नहीं आएगा. व्हाट, व्हाई आर वी सॉल्विंग सो मेनी बुक्स और सो मेनी क्वेश्चन, सो मेनी मॉक्स, सो मेनी टेस्ट क्यों दे रहे हैं? सो दैट वी गेट यूज्ड टू द पैटर्न ऑफ एग्जाम. I understand the concept, but not always I can solve a question from that chapter. I'll try my best to solve, but even if I can solve, but it will take a long amount of time. So it's not worth it to attend in the exam. Maybe I'll pick an easier question, and that is what the nature of the exam is, and that is what you need to understand. People get carried away with the chapters. Chapters को लेके कभी exam crack होगा ही नहीं. You have to read all chapters, but then strategize, think for like ऐसे कि मैं जब 2 घंटा बैठ रहा हूँ, in what best possible way can I manage my time? In what best possible way can I select the questions so that I'll get a good score? Okay, score उन लोगों का सिर्फ अच्छा नहीं आता जो एक चैप्टर या एक सेक्शन में they are extremely good. ठीक है, that's a good thing for them. But even if you are not extremely good, but you are average, still you can get a 95 to 97% if you just give the exam correctly. Okay, and try and understand that part of it. ठीक है. Hello Nikhil, welcome everyone. तो ये मॉक टेस्ट है कल, डेफिनेटली ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेट. एंड दिस इज अ कोर्स दैट आई रिसेंटली कंप्लीटेड, एंड अभी 2022-2023 के लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं. सो यू कैन join me in my live classes by taking either a plus or an iconic subscription. I'll talk about this towards the end of the video. You can use my code and get a 10% discount. ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में भी you can check the courses and all are mentioned, so you can take a subscription using this code and avail a 10% discount. Also, you can watch all my free classes on the Unacademy platform using this code. Okay, all the free classes will be accessible if you use this code. Okay, no subscription needed. The free classes you can access. अभी free classes में हम revision कर रहे हैं all topics of quants and practice sessions भी कर रहे हैं, so you can attend them also if you are not yet on the Unacademy platform. So let us start with the questions today. First question. It's a dishonest merchant question. Okay, dishonest merchant question, and I'll try and solve it in 2 ways. If you know the answer to this, do feel free to write your answer in the comment section after you have solved this. In the meantime, let me explain this. Dishonest dealer claims to sell a product at its cost price, but uses a weight that is 20% less than the original weight. So this is first way of cheating. Okay, faulty weight. 20% less than the original weight means if he's supposed to give you 1000 grams, he is actually giving you 800 grams, isn't it? 20% less. So that is one way of being dishonest. Further, greed overtook him and he added 20% impurities to the product to increase the profit. Okay. To find the percentage profit of the dealer in the entire transaction. इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है. That to take let the cost price of 1 gram be 1 rupee. I'll tell the shortcut later. पहले नॉर्मल प्रोसेस करते हैं. Let cost price of 1 gram be 1 rupee. Now we'll just go according to the question. अभी जो dishonest dealer सेल कर रहा है, तो 1000 grams का cost price is how much? 1000 rupees. So this person is claiming to sell the product at its cost price. वो claim कर रहा है कि मैं कोई फायदा नहीं रख रहा हूँ, जितना कॉस्ट है उतने में सेल कर रहा हूँ. That means if a customer comes to him and asks for 1 kg, तो selling price of 1000 grams भी वो बोलेगा 1000 rupees है. ठीक है. So this is the first point to keep in mind. Selling price of 1000 grams is 1000 rupees. But अभी ये क्या कर रहा है? He is adding 20% impurities. तो अब वो मान लो उसके पास 1000 ग्राम है, उसमें अगर वो 20% impurities ऐड कर देता है, तो what will happen? Directly तुम्हारा क्वांटिटी बढ़ जाएगा. 20% impurities on 1000 gram is like 200 grams. अब कोई impurity क्यों ऐड करता है?
जैसे दूध में वो जो पानी मिलाते हैं, वाई डू ऐड वाटर? बिकॉज इट कम्स like at a cheaper price or it's maybe free of cost at times. So I can increase my amount without like incurring any further cost. So that is why I add, and people won't know it. That's the meaning of adulteration. यहाँ पे जो impurities add किया, now the customers won't know that he has added, but he will claim this to be the actual product and sell. So he could make a direct increase in quantity by adding impurities. That's the reason he is adding. तो 20% impurities ऐड किया मतलब 1200 ग्राम्स का, बट कोई उसका कॉस्ट इंक्रीज तो हुआ नहीं। तो अभी कितना हो गया? 1200 ग्राम्स का प्राइस इज 1000 रुपीज। 1200 ग्राम्स का प्राइस इज 1000 रुपीज, तो 1 ग्राम का प्राइस कितना हो जाता है? 1000 by 1200 और 5 by 6 रुपीज। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। इसका बहुत ही शॉर्टकट लाइक वेरी सिंपल प्रोसेस, 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा, बट ये मैं तुमको जनरल प्रोसेस समझा रहा हूँ सो दैट इस कैटेगरी का कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। दैट शॉर्टकट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल क्वेश्चन, बट इफ यू नो दिस प्रोसेस, एनी क्वेश्चन ऑन दिस कैटेगरी विल बी एबल टू सॉल्व। तो 1 ग्राम मेरा आ गया 5 by 6 रुपीज। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन अ कस्टमर विल आस्क हिम फॉर 1000 ग्राम, तो वो कस्टमर को कितना सेलिंग प्राइस चार्ज करेगा ना? कस्टमर को 1000 रुपीज सेलिंग प्राइस चार्ज करेगा। बट व्हाट इज द कॉस्ट इनकर्ड? उसके पॉकेट से कितना खर्चा हुआ? Is he actually giving 1000 grams to the customer? No, he's using a faulty weight, जहाँ पे वो कस्टमर को instead of 1000 is giving 800 grams, तो उसको बेसिकली 800 ग्राम्स का खर्चा हुआ है, एंड पर ग्राम का उसका कॉस्ट प्राइस कितना आया था? 5 by 6 रुपीज। दिस इज नॉट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट, मतलब वो मिक्सचर जो इंप्योरिटीज ऐड करने के बाद पर ग्राम का कॉस्ट प्राइस 5 by 6 रुपीज, तो 4000 by 6 रुपीज। So I got the cost, I know the sales. What is the profit? Profit is like 1000 minus 4000 by 6, 2000 by 6 rupees. And the profit percentage is profit upon cost price into 100. So you get 50%. थोड़ा लंबा है, but I hope all of you understand how am I approaching this. I just started with 1 gram as 1 rupee and then just go with the question. एकदम simple. ठीक है? So this is basically one approach to solve this. Hope this is clear. Do feel free to ask your questions in the comment section. ठीक है? At any point if you are not able to understand. Now that's a very simple process जो shortcut है. अगर तुम इसका ट्रांजैक्शन को ब्रेक डाउन करोगे, उसका जो प्रॉफिट हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ 2 रीजन। वन इज वो अडल्टरेशन कर रहे हैं। अडल्टरेशन मीन्स इट्स अ डायरेक्ट इंक्रीज इन क्वांटिटी। तो जितना तुम्हारा क्वांटिटी इंक्रीज होगा तुम उतना ज्यादा सेल कर सकते हो, उतना डायरेक्ट प्रॉफिट। सो 20% इंप्योरिटीज मतलब प्रॉफिट इज डायरेक्ट 20%। मैं उतना क्वांटिटी बढ़ा तो उतना भी सेल करूंगा, डायरेक्ट 20%। एंड और एक है फॉल्टी वेट। फॉल्टी वेट में जब उसको कोई 1000 ग्राम्स वो दे रहा है, उसको एक्चुअली 800 ग्राम्स, तो हाउ मच डिड ही सेव? आई सेविंग 200 ग्राम्स। तो 200 grams on every 800 grams cost that he incurs. So first profit is 25%. ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, इसमें बहुत लोग थोड़ा मिस्टेक कर लेते हैं। 200 grams on 1000 grams सोच लेते हैं, तो उसने कभी 1000 ग्राम दिया ही नहीं है। अब तुम मुझे 1000 मांग रहे हो, मैं चीट करके तुम्हें 800 दिया, तो मेरा खर्चा कितना हुआ? 800 ग्राम्स का। एंड ऑन एवरी 800 कॉस्ट इनकर्ड आई एम सेविंग 200 ग्राम्स। तो 200 on 800, 25% प्रॉफिट। तो बेसिकली दो टाइप का प्रॉफिट हुआ। तो जस्ट सक्सेसिव प्रॉफिट का अप्लाई कर लो, लाइक जो फॉर्मूला है ओवरऑल प्रॉफिट, यू कैन डू इट इन दिस वे। इट इज P1 प्लस P2 प्लस P1 इंटू P2 बाय 100। 25 प्लस 20 प्लस 25 इंटू 20 बाय 100, so you get 50%. दिस इज द शॉर्टकट। ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये शॉर्टकट है। तो एक्चुअली सॉल्व तो इतना ही करना है, बट रेस्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। ओके, डोंट जज अ क्वेश्चन बाय द लेंथ ऑफ इट्स आंसर। आंसर देख के हम बहुत बार सोचते बड़ा आंसर है तो लेंथी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, छोटा आंसर है तो इजी होगा, वैसे नहीं है। थिंक अबाउट द लॉजिक एंड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। वी कैनॉट वेस्ट आवर टाइम इन मेकिंग गेसेस, ऐसा आएगा वैसा आएगा, बट यू डू गेट माई पॉइंट। जो क्वेश्चन अच्छे लॉजिक बेस्ड है क्वेश्चन, ओके, नॉट अननेसेसरीली लेंथी। डिफिकल्ट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि लेंथी है, बेकार का कैलकुलेशन, उस टाइप के क्वेश्चन करना ही नहीं है एग्जाम में।
It's not worth it. Okay, exam is not about showing your prowess of solving all questions. No, be smart, select the right amount of questions. आधे से थोड़ा ज्यादा करके आ जाओ, करेक्ट करो, आ जाएगा 99. So that's the purpose of the exam. ठीक है? So hope the first question is clear. Two methods I explained. Let us go to the second one. Again a very good question. G is this set 3 by 64. Let me write it as 3 into 2 to the power minus 6, and then 3 into 2 to the power minus 5, then 3 into 2 to the power minus 4. 3072 is 3 into 1024. 1024 is 2 to the power 10. कुछ नंबर है वो जो तुम्हारे माइंड में रहने चाहिए फॉर फास्ट कैलकुलेशन. 2 to the power 10, 1024, ईश्वर कैट एस्पिरेंट, ये सब पता रहना चाहिए. 2 to the power 10, 1024, हर डिजिट का फोर्थ पावर पता रहना चाहिए. यू शुड हैव दैट कंफर्ट लेवल विद नंबर्स. तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गए? -6 से 10 तक. -6 से -1 6 टर्म, 0 7 टर्म, 1 से लेकर 10 10 टर्म. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 17. बोल रहे H इज अ सबसेट ऑफ G. मतलब फ्रॉम G आई विल टेक अ फ्यू एलिमेंट्स एंड पुट देम इन अनदर सेट. लेट दैट सेट बी H. So H is a subset of G such that no two elements of H is 144. मतलब मान लो दो एलिमेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उनका प्रोडक्ट 144 नहीं आना चाहिए. नहीं आना चाहिए बोल रहा है. तो आई ट्राई अवॉइडिंग दैट सिचुएशन. तो कैसे आएगा 144? नाउ लुक एट दिस. एवरी टर्म हैज अ 3. 144 इफ आई ब्रेकिंग इट डाउन, इट इज 3 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 4. अब मैं G से कोई भी दो एलिमेंट लेके अगर मल्टीप्लाई करता हूं, 2 3 तो आएगा ही आएगा. Isn't that obvious? Every element has a 3, so if I'm multiplying two elements, I'll get 2 3s. So 144 का 3 square we cannot avoid. Any two elements you multiply 3 square तो आ ही जाएगा. What you can avoid is 2 to the power 4. तो 2 to the power 4 कब आता है? ऐसे सोचो, 3 into 2 to the power minus 6 है. इसके साथ अगर मैं 3 into 2 to the power 10 मल्टीप्लाई करता हूँ, तभी आएगा 3 square into 2 to the power 4. तो दैट मीन्स अगर मैं 2 to the power minus 6 ले रहा हूं, आई कैन नॉट टेक 2 to the power 10 एंड वाइस वर्सा. लॉजिक समझ आया? अगर तुम फर्स्ट टर्म ले रहे हो, तुम लास्ट टर्म नहीं ले सकते, क्योंकि 2 to the power minus 6 के साथ 10 मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा 2 to the power 4. और कुछ मल्टीप्लाई करो नहीं आएगा. तो इफ यू लुक एट ऑल 17 टर्म्स, आई कैन ब्रेक देम इन दिस वे. बीच में एक मिडिल टर्म रहेगा तुम्हारा, एंड हियर आई हैव 8 टर्म्स, and here I have 8 terms. यहाँ पे जो 8 they are like pairs, first last, second second last, third third last. तो ये जो 8 pairs आए मेरे यहाँ पे, उनमें से तुम कोई भी 8 एलिमेंट्स लो. जैसे अगर फर्स्ट ले रहे हो, लास्ट नहीं ले सकते. सेकंड ले रहे हो, सेकंड लास्ट नहीं ले सकते. एंड मिडिल एलिमेंट इज फ्री टू बी टेकन. सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट यू कैन टेक हियर इज 9. ओके, इट इज लाइक अ सिमेट्री. तुम फर्स्ट लास्ट को एक पेयर सोचो, सेकंड सेकंड लास्ट को एक पेयर सोचो, थर्ड थर्ड लास्ट को एक पेयर सोचो, एंड लाइक दैट. इफ यू वांट आई कैन राइट द पेयर्स हियर टू एक्सप्लेन. जैसे 3 into 2 to the power minus 6 is paired with 3 into 2 to the power 10. Then 3 into 2 to the power minus 5 is paired with 3 into 2 to the power 9. 3 into 2 to the power minus 4, 3 into 2 to the power 8. देखो each केस में प्रोडक्ट कितना आता है, just check. 3 into 2 to the power minus 3, 3 into 2 to the power 7, then 3 into 2 to the power minus 2, 3 into 2 to the power 6, 3 into 2 to the power minus 1, 3 into 2 to the power 5, 3 into 2 to the power 0, 3 into 2 to the power 4, and 3 into 2 to the power 1, 3 into 2 to the power 3. एंड ये दोनों के बीच में 3 into 2 to the power 2 बस अकेला एलिमेंट आ गया. नाउ ये सारे पेयर्स में, इन ईच पेयर हियर जितने भी मेरे पेयर्स आए, इन ईच ऑफ दिस पेयर्स यू सी इट्स ईदर और. या तो अगर मैं इससे लेता हूँ, आई कैन नॉट टेक दिस. सपोज आई एम टेकिंग दिस, आई कैन नॉट टेक दिस. तो ईच पेयर ओनली वन एलिमेंट टू बी टेकन फ्रॉम ईच पेयर. अभी आ रहा है समझ? ओनली वन एलिमेंट टू बी टेकन फ्रॉम ईच पेयर.
तो 8 एलिमेंट्स एंड जो मिडिल एलिमेंट था जिसका और कोई पेयर नहीं है फ्री है, तो आंसर इज। क्या पूछ रहे हो निखिल? एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हूँ, मुझे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक करने होंगे? कौन से इजी वाला इक्वेशन टॉपिक्स बताओ? वैसे देखो निखिल, although I definitely would try to help you that way by telling the topics, but my advice would be you cannot predict anything. अभी तुम्हें सुनने में अच्छा लगेगा अगर मैं 3-4 टॉपिक बोल दूं, तुम्हें लगे अरे हाँ सर बता दिया, अभी इसको कर लेता हूँ मेरा हो जाएगा। एग्जाम डजंट वर्क दैट वे, ठीक है? मैं आई कैन टेल यू द टॉपिक्स, बट दैट इज एन ऑब्वियस कंक्लूजन। जब भी मैं तुमको टॉपिक्स, मान लो मस्ट सॉल्व टॉपिक्स अगर बोलना ही है जस्ट फॉर ऑल, तो एक तो तुम पहले टाइम एंड वर्क कर लो। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तुम लॉगरिथम्स कर लो, लॉगरिथम से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तुम टीएसडी का कर लो, स्पेशली रिलेटिव स्पीड एंड सर्कुलर ट्रैक, ठीक है? देन तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कर लो। देन SICI एक क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एक क्वेश्चन आएगा, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 2 क्वेश्चन। देन मेंसुरेशन कर लो, एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का आएगा ही आएगा। ऑलराइट, सर्कल्स भी तुम कर सकते हो। देन नंबर्स में थोड़ा रिमाइंडर्स देख लो। देन साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट्स देख लो। तो वैसा करके वी कैन टेल यू द टॉपिक्स लाइक दिस, बट ऐसा में बोल देना कितना इजी है, टाइम एंड वर्क कर लो। अब एक्चुअली टाइम एंड वर्क करना एंड बी प्रिपेयर्ड इन दैट वे दैट एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस कम्स आई विल बी एबल टू सॉल्व। इट्स नॉट दैट लाइक इट्स नॉट दैट इजी एज इट लुक्स कि मैं ऐसा चैप्टर पढूं, इतना प्रैक्टिस करूं, कुछ भी आएगा मैं कर सकता हूँ। प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है नहीं। एंड नो मैटर हाउ मच यू सॉल्व, देयर विल ऑलवेज बी अ न्यू क्वेश्चन व्हिच यू माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व। मे बी उस स्लॉट में उस दिन तुम्हारा डिफिकल्ट आ गया वो क्वेश्चन। तो इसीलिए सारे चैप्टर्स पढ़ो एंड ट्राई टू सॉल्व। सेफ साइड के लिए मैं बोलूंगा यू ट्राई अराउंड 8+ क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन तो करेक्ट करना ही करना है कैसे भी हो। अगर 8 क्वेश्चन तुम करेक्ट लाते हो, यू विल गेट अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है? So hope this is clear, all of you. And just a quick announcement before we proceed forward. CAT 2023 का एक October 20th को इवनिंग बैच, and then Kickstart 2023 October 27 को इवनिंग बैच. So in this you can join these batches if you have a subscription. If you're taking a subscription, do use my code DASLive and you can get a 10% discount on your subscription. Plus वही iconic को 10% discount मिलेगा. Let us think of this number. Here's that question, the previous that question. X be a positive integer, 4-digit positive integer. Okay, X is a 4-digit positive integer. मान लो like this, such that the unit digit of X is prime. Now what are the prime digits available with you? 2, 3, 5 and 7. And the product of all the digits of X is prime. मान लो ऐसा एक है, तो A into B into C into D is prime. Now this statement is quite interesting. Prime number के 2 ही factors होते हैं, one under number itself. जब मैं ये प्राइम बोल के A B C D, यहाँ पे तो 4 फैक्टर दिख रहा है, A is a factor, B is a factor, C is a factor, D is a factor. प्राइम नंबर का तो 2 ही फैक्टर होता है, and D already एक फैक्टर है and the second factor is 1 itself. So from that you can conclude, okay, if the product of all is a prime number, that means A is equal to B is equal to C is equal to 1. You cannot have any other prime number because product of 2 primes is not a prime number, it's a composite number. ऑलरेडी अगर D एक प्राइम नंबर है, बाकी सबको 1 ही होना पड़ेगा, दिस इज ओनली वे. तो बेसिकली क्या क्या नंबर्स आएंगे? 1 1 1 2, 1 1 1 3, 1 1 1 5 and 1 1 1 7. These are the 4 possible numbers. Quite easy question. Is everyone clear on this? Please let me know in the chat section if you have difficulties in any part. Okay, no problem. You're welcome, Nikhil. Hope this question made sense and it's clear to everyone. Let us take a look at this one. Before getting into this question, there are 3 formulas जो सीरीज में and इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत बार यूज होता है.
तो पहला फॉर्मूला इज दिस 1 + 2 + 3 + 4 till n. Sum of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2. Then sum of square of first n natural numbers is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. And sum of cube of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2 का whole square. ये तीन formula at least always keep in mind. You can get a lot of questions in different ways from these three formulas. Okay, very important. Sum of square of first n natural numbers, sum of cube of first n natural numbers, and just simple sum of first n natural numbers. Now let us come to the question. Now maths teacher had to conduct an oral test in which the student had to add an actual number starting from 1. One of the students came up with the sum as 680. अब वो कितना तक ऐड किया वो स्टूडेंट हमें पता नहीं, तो लेट अस से वो n तक ऐड किया है, तो उसका सम आना चाहिए था n into n plus 1 by 2. Okay, this is the actual sum. उसका कितना सम आया? सम obtained is how much? सम obtained is 680 and टीचर बोल रहा है this answer is wrong. ये आंसर रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? Because the student had missed one number in the sequence during addition. तो ऐड करते टाइम उसने एक नंबर मिस कर दिया. So can I say the sum obtained is less than the actual sum? जितना सम आना चाहिए था अभी उतना आएगा नहीं, तो sum obtained is less than the actual sum. जितना तुम्हारा सम आना चाहिए था उतना आएगा नहीं, it is less than the actual sum. So I can write 680 is less than n into n plus 1 by 2, or I will get n into n plus 1 is greater than 1360. यहाँ से मुझे n into n plus 1 का वैल्यू फिगर आउट करना है. बट आई होप दिस एक्सप्रेशन इज क्लियर कि कैसे हम सॉल्व कर. अभी जब तुम n into n plus 1, don't try and open this and solve it as a quadratic polynomial. So think of it in this way that if n into n plus 1 दिया है, so this is approximately closer to n square क्योंकि n and n plus 1 are consecutive numbers. Product is approximately closer to n square. तो क्या क्या numbers हैं जो square number 1360 के आसपास? 36 square is 1296. 37 square is 1369. तो 37 तो नहीं ले सकता. अगर मैं n को 36 लेता हूँ, we are taking n as 36. तो एक्चुअल सम कितना आएगा? 36 into 37 by 2. 18 7 जा 126. Carry 12. तो बाई 2 मत करो, जस्ट कीप इट दिस वे. अगर n को यहाँ पे हम 36 ले रहे हैं, 36 into 37 कितना आ रहा है? It should be greater than 1360. So 36 into 37. 36 into 7 is like 252. Carry 25. 36 into 3 is 108. 20 128. 1332. तो नहीं हो रहा है, तो मैं n को 37 लूंगा. तो 37 into 38. 37 into 38 कितना आएगा ना? 38 का स्क्वायर माइनस 38. तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 1406 आ रहा है. तो एक्चुअल सम कितना आएगा? एक्चुअल सम ना 37 into 38 by 2, तो 703. तो सम रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट शुड बी 703. ये प्रोसेस सब समझे तो क्या कर रहे हैं हम?
I got this relation, मैं यहाँ पे open करके I didn't solve it as quadratic because it will get a little lengthy. So n into n plus 1 they are consecutive numbers, so the product is approximately around n square. तो मैं देखा कि कौन सा स्क्वायर इसके आसपास है. 36, 12, 96, 37 is 1369. तो मैं जब 37 into 38 कर रहा हूँ, I'm getting 1406. तो एक्चुअल सम इज 703. तो आना चाहिए था 703, उसका आया है 680. तो विच इज द नंबर दैट ही मिस्ड? 23. Isn't it? The number that he missed is 23. This is how you solve these kind of questions. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. हाँ, वो 46 जो एक्चुअल सम नहीं है, वो n into n plus 1 है. जब सम करेंगे ना प्रियंशी, वो बाई 2 करेंगे ना, n into n plus 1 बाई 2. जब बाई 2 करेंगे 46 बाई 2 होगा 23 है. समझ रहे हो? निखिल, ज्योमेट्री अगर देखो, यू आर स्ट्रगलिंग विद ज्योमेट्री, आई विल एडवाइज मेंसुरेशन सर्कल, इसको पहले कर लो. These are easier chapters to like capitalize on. Mensuration and circle, then go to quadrilaterals, then go to triangles. And triangles का भी similarity पे ज़्यादा फोकस करना है. Apollonius theorem, angle bisector theorem, जहाँ जैसे questions आ रहे हैं, the more you try and study the previous year questions, you will get an idea कि क्या actually important है. ऐसा हम लोग थोड़ी भगवान है, हमें पता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा. तो सोचो, how are we like making an assessment because of the past records. ये इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ऐसा रिपीट होता है, इस लॉजिक से ज्यादा पूछ रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली वही होगा, मोस्ट लाइकली. एंड देयर विल बी सम एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, बट मोस्ट लाइकली पैटर्न वही रहेगा. तो इफ आई स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट ऑन ज्योमेट्री पार्ट, सर्कल्स एंड मेंसुरेशन पहले उसको कर लो, तो दैट विल बी इजियर टू कवर. चलो, लेट अस सी दिस वाज अगेन अ प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन. The digits of a 3-digit number A are written on a reverse order to form another 3-digit number B. तो एक 3-digit number A है, let us say it is ABC. I can write it as 100A plus B, 10B plus C. ठीक है, 100A plus 10B plus C. And another 3-digit number B जहाँ पे digits are written in reverse order, तो 100C plus 10B plus A. बोल रहा है if B is greater than A, can I say C will be greater than small a? मतलब B अगर A से बड़ा है, that means उल्टा करने के बाद ये जो यूनिट्स प्लेस जब हंड्रेड्स प्लेस पे आता है, it creates a bigger number, तो C is greater than A. And B minus A is divisible by 7, तो B minus A कितना होगा? 100C minus C, 99C minus 99A, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाता है. 99C minus 99A is a multiple of 7, और 99 कॉमन, C minus A is a multiple of 7. अब RHS में जो मल्टीपल ऑफ 7 मीन्स एक 7 तो आना चाहिए. कैन इट कम फ्रॉम 99? 99 से तो कोई 7 हो ही नहीं सकता. दैट मीन्स C minus A is a multiple of 7. दिस इज द ओनली कंक्लूजन. C minus A has to be multiple of 7. नहीं तो फिर 7 आएगा कहाँ से? 99 तो 9 and 11 है. तो इफ C minus A is a multiple of 7, दैट मीन्स क्या क्या हो सकता है? C minus A, it could be 7, it can be 14, it can be 21, it can be 0 also and so on. अब ये 14, 21 ये सब नहीं होगा. क्यों? बिकॉज C and A are digits. One digit minus another digit. How can you get a 2-digit number? तो सिंगल डिजिट ही रहेगा. अब C minus A 0 भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उस केस में C is equal to A आ जाएगा, which is not possible. तो ओनली केस पॉसिबल इज C minus A is 7. तो C9 A2, C8 A1, ये दो टाइप के ही नंबर हो सकते हैं. If C is 9, A is 2. If C is 8, A is 1. C7, A is 0 ले सकते हैं, but A 0 हो गया मतलब you don't have a 3-digit number to begin with. So my numbers are in this form. C and A आ गया 1, 8, तो 1B 8 हो गया, and then 2B 9 हो गया. PNC 14 and 21 इसीलिए नहीं, क्योंकि सोचो ऐसा, ये C minus A तो एक डिफरेंस है. What can be the maximum value of C? इट्स अ डिजिट, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 9, तो 9 माइनस अनदर डिजिट, हाउ कैन इट बी 14? तो इसको -5 लेना पड़ेगा. कैन ए बी -5? इट्स अ डिजिट, इट कैन नॉट बी -5, so that is why not possible. अभी समझ आया?
क्योंकि C माइनस ए इज द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। अगर मैक्सिमम डिजिट 9 है तो डिफरेंस अभी कोई भी 2 डिजिट का लेंगे वो 9 से नीचे ही आएगा। तो नाउ दैट यू नो ए एंड सी, तो B यहाँ पे देखो इज इमटेरियल, क्योंकि B अपने आप बीच में कैंसिल हो ही जाता है, तो B तुम कुछ भी लो। तो इट कैन बी 108, 118, इट कैन बी 128, 138, ऐसा करके टिल 198। सिमिलरली 209, 219, 229, ऐसा करके टिल 299। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज दिस मच एंड मिनिमम वैल्यू इज दिस मच। ए का मिनिमम 108 and maximum is 299. So I must go with an option which includes everything 108 से 299 के बीच में. So what can be that option? यहाँ पे 299 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो I'll go with this thing. यहाँ पे 108 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी CAT 2005 या 6 का ये क्वेश्चन नंबर्स एरिया से। You see, it's not very difficult. We just have to go with the question. तो ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो your brain will open upon how to think and all. Okay, and accordingly you can prepare for the exam. You will not be under a lot of stress. FMS का ST में I don't have much idea, निखिल. I'll have to check ST में exactly कितना कट ऑफ रहता है। जनरल का तो 99 प्लस ही रहता है, बट ST में FMS का I am not aware of the exact कट ऑफ। थोड़ा चेक कर लेना गूगल में। ठीक है, so these are the 5 questions for today's session. If you are new to the class, you can watch the previous must solve questions. I'll take total 15 sessions. This is the 14th session, so one more session to go. So watch the previous sessions and previous questions यहाँ पे जो solve किए हुए हैं, write them at one place. You'll definitely find a lot of useful insights from those questions. ठीक है, तो बैच अलर्ट तो बोल दिया, एंड कल ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, तो ऑल ऑफ यू प्लीज पार्टिसिपेट इन द ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। प्रीवियस क्वेश्चंस इसको डेफिनेटली सॉल्व करो, वेरी इंपॉर्टेंट। द मोर यू सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस, द मोर योर क्लैरिटी ऑफ क्या हो सकता है एग्जाम में, वो आइडिया क्लियर हो। एंड लेट्स क्रैक वर्बल इज अ न्यू वर्बल चैनल. इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद द VRC portion, you can refer to the content on this channel. That is it again from my end for this class. Thank you all for joining. Hope you guys enjoyed the session. Please watch the previous classes, make a systematic note of the questions, and regularly practice. Okay, so subscribe to our CAT-alyst channel, like the video, share it with your friends, and we'll meet again in another session. Till then, have a nice day.